हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीयूष वर्मा ऑफिशियल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपकी इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिकल पोर्शन से। और फ्रेंड्स, ये जो है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जनरली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर इन्वायरमेंटल साइंस या फिर आप गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है वहाँ उसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये है क्या। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जो कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर सके। जैसे हम कह सकते हैं कि यस, सेंट्रल वैल्यू इज अ टिपिकल वैल्यू विच ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन वेयर सम ऑब्जर्वेशन आर लार्जर एंड सम अदर्स आर स्मॉलर देन इट। सो हियर we use a term that is average, and average is a general term which is used to describe or which describes a center of a series. So again, this is very very important to know. When you talk about the central tendency, so again there is some characteristic we must keep in your mind. So it is rigidly defined, and the second is it is based on all items, as well as it is easy to understood, and it is unduly affected by extreme values. So these are some characteristics which are very very important for the exam point of view. Okay, and I would like to say one thing that is also important, and it is measures of central tendency. So the common measures are mean, median, and mode. Mean, in other term, we also call it arithmetic mean or generally average. So average is determined, or arithmetic is obtained by summing up all the observation and dividing the total number of observations. It can be represented by this formula you can see on your screen. Let's suppose x1, x2, x3 dot dot xn. These are the number of observation. Okay, for variable x, and arithmetic mean is represented by x bar. So it is given by this formula: x bar is equal to summation I is equal to 1 to n, that is the range, xi upon small n, where summation denotes these terms: x1 plus x2 plus x3 dot dot plus xn, means there are total nth term, and it is divided by total number, that is n. सो दिस इज द फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो फॉर अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। सो द फॉलोइंग टेबल्स आर गिवन मार्क्स, वी कैन सी marks are given in statistics of 10 students of BCom honors in Serampore College. So the example you can see roll number and marks have been given, and we have to calculate the arithmetic mean of marks in statistics among these students. So you have to prepare a table, and after preparing the table, you can see you accordingly roll number and marks. The total number of observations are 10, means there are 10 students, and total marks are, after getting summation, we can see after adding all the marks we can represent like 690. Okay, it will be 690 about. So now after applying the formula you can get the arithmetic mean, that is 69. Okay, here dividing 690 by 10 you will get 69. So arithmetic mean of marks obtained in statistics by students is 69. So this is a very very simple example, I think, and it will not be so complicated to understand. Again, I would like to show you another example, but before going to that example,